Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Dete Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paskacha Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki, Gaura Premananda, Simaya Purdam ki, Sri Sri Radhamadva ki, Gaura Premananda. So, we still have a few minutes, but Yes, 4 minutes. today, yes, Prabhuji. May I? Ago. Okay, so today we're going to talk about something quite interesting. Where is eternal happiness? You see, it's not just where is happiness, it's a qualifier in there. What is eternal happiness? Is that Kushboy there? Anybody can translate? Or I keep going in English? Gora Prabhu will translate, so we are waiting for him. Okay, it's in the car, it's getting home. Okay. After he reached home, we'll Okay, translate. so what we do, we wait. Anybody has a question? Let's talk about some question. Yes, Prabhuji, please share your feelings about My feeling. It's nice to see, the movie focused a lot in Prahlad Maharaj. Because we always focus ourselves in Nrsingadev. In Mayapur, that's a beautiful deity that's a Ugra Nrsinga, That is, I think there's like 6 or 8 types of Nrsingadev, and one more specific is Ugra Nrsinga, which is the formal Nrsingadev. He just came out of the pillar, and he's really, really angry. Then you have Yoga Nrsinga, you have Lakshmi Nrsinga, so many things. So we focus a lot in Nrsingadev. By the way, you see, after many years in devotional service, I came to the conclusion that this universe won't be complete without Lord Nrsingadev having manifested in this universe. That just something would be missing. Gotta have Nrsingadev. You 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 gotta have
So, and we could see Prahlad Maharaj, what actually he went through. And his own father tried to kill his son. Why? Because he's not towing the line with his demonic program. He's supposed to be somebody that is going to take over from him and be a good demon, if that is possible. But he was fully in devotion with the Supreme Lord. And he was strong devotion. And the fact that he went through so much difficulties, first they tried to dissuade him. Then his friends, what are you doing? But his devotion, his determination to serve the Lord, one by one, he started to conquer their hearts. Even his friends, his so-called demonic families, okay? From the ministers, from the people in the government, the children of those people, and they have the ideas of the parents and everything. But then they start to become, the minds change. So Prahlad Maharaj, he actually is a great preacher. Haribol Gora, nice to see you in there. I'm just finalizing here so we can start. We're waiting for you to come because you're going to be the Hindi personality today. Prahlad Maharaj was a very a great preacher. First, he was a child who has a simple, no logic, but he has a simple presentation of Krishna consciousness, and was disarming to the heart of the people. You see, the people that hear him. His simple attraction to Lord Vishnu. You see, and he has such a fierce determination, and even a sage in the movie says this is a one in a million type of devotee that comes and take birth in the situation. So he was very special devotee. And so the Lord, he did something that is unheard of. Did you ever heard anything coming out from a pillar? This is, this something that is, it's very, we talk about different miracles, but this is a mystic manifestation. Because Prahlada said he is everywhere. His father said he's in this pillar. He's in the pillar too. He was, in the sense, in the movie, he was like, he was seeing Vishnu everywhere. So he said he's in the pillar too. And his father was challenged. No, this Vishnu, he's no good. He's a coward. Why does he show up? I want to fight him. You see, even when Nrsingadev appeared, his man, he tried to go and fight Nrsingadev. He said, no, he's mine. I want to fight him. You see, he has this, I'm going to fight. He was not afraid of Nrsingadev at all. You see, no, in the beginning, after he got kicked a while, he can change his mind. So it is, it's a beautiful lila, actually. And, there's so many points we can learn on that. So, little Prahlad. Prabhuji, your camera is moving. I advise everybody to, no, because it's where it is, it's moving. Yes, your camera is moving. I try to have a stabilize. No, it's the computer is moving. It's the computer Okay. is in Okay, thank you. and I'm here in a sack of a little mattress, and the mattress is moving
I work this detail next time. Okay. Okay, see what to do. So there was an incredible experience, and because the movie is great, right? With the voice, we're like in the desert, you are in the desert, you see a glass of water, you get so excited. It's just water. But with the devotees, I mean, we don't go much in movies, not really something that we appreciate. But once you go in a movie and you see the Shingadev, it's a great experience. But then we have 200 people in there, all devotees, make the experience like 10 times more. You see, 10 times more, because all together. And every time Nrsingadev, kick some butt, like first Varaha, everybody go, yeah, yeah. It's like it's like we're cheering for Nrsingadev. And then, when when he finished Hiranyakashipu and kick him in very hard, Hare Krishna. So when kicking very hard, so the whole theater was there. What do you say? Cheering Lord Nrsingadev. It was very, exciting. Uh, Very exciting uh, moment. Okay, so you all there? How many people here? Okay, wow, they come quick. Okay, Hare Krishna. So we're gonna do this. What is eternal happiness? How that say that in Hindi? हरे कृष्णा एवरीवन। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आप अपने घर पे आराम से बैठ के प्रभु जी की क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक है वेयर इज इटर्नल हैप्पीनेस। वो शाश्वत खुशी कहाँ पे है, कहाँ पे है वो? यस प्रभु जी। Okay. Does everybody looking for happiness? Are we looking instinctively for happiness? Doing things that make our life better, make our mind better. We're looking for happiness. Do we ever went to the pharmacy? Here we have the big pharmacy, is a chain, right? And we go there and say, please, and Prabhupada gave this example. Can you give me a pill for a headache? Did you ever go there? No. We go there and get medicine to feel better. You see? So carry on, Prabhuji. Carry on. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे हम जैसे सिर दर्द की दवाई मांगते हैं, है ना, तो वो हमें सिर दर्द की दवाई दे देता है। यस प्रभु जी। So here it's interesting because where can I find where is eternal happiness? It's not just happiness. You qualify here as a happiness that's eternal. So therefore, by this simple headline, we can uh, start analyze the mechanics of happiness. And one of the things is we already are in a position we can know material happiness and spiritual happiness. So what is the thing with material happiness, right? Matrais pasar tu kaunteya shitos na suka dukada. Happiness and distress come and go like summer and winter,
seasons. They're temporary. We must learn to tolerate them. The problem with material happiness, the main problem is temporary. Now, sometimes, okay, let's या get there. थैंक यू प्रभु जी। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प है। जैसे कि फार्मेसी की दुकान पे हमें कोई सिर दर्द की दवाई मिल जाती है, तो उसी प्रकार से ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर हमें वो खुशी मिल पाएगी, और ना केवल खुशी बल्कि शाश्वत खुशी जो हमेशा रहे। ठीक है, कि जिसको प्राप्त करने के बाद हम हमेशा खुश रहें, आनंद की स्थिति में रहें। ठीक है, तो जैसे खुशी इस भौतिक संसार में भी है ना, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बताया है, जो भी प्रभु जी ने रेफरेंस दिया है, तो जो खुशियां हैं या जो आनंद है इस भौतिक संसार में, वो क्या है, आता और जाता रहता है, वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम वो परमानेंट जो खुशी है वो कैसे प्राप्त करें, कहाँ मिलेगी हमें वो? यस प्रभु जी। You see, because Srila Prabhupada explains material happiness is flickering, just like the enjoyment of eating, sleeping, mating, and defending. It appears for a moment, then it's gone. It's like mirage in the desert. Mirage. You see water, but when you get there, there's nothing. Now, we have to educate ourselves to look for eternal happiness, happiness that will not fade away. तो प्रभु जी ने अभी बताया है कि इस भौतिक संसार में जो खुशी है, ठीक है, वो क्या है, एक जैसे गर्मी के मौसम में जो मरीचिका होती है ना, जैसे हमें रोड के ऊपर पानी जैसा दिखाई देता है ना, गर्मी के मौसम में कहीं हम खेत में देखें, कहीं भी देखें तो पानी जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो इस संसार में जो खुशी है वो इसी के समान है, दिखती तो है लेकिन होती नहीं है। तो हम कहाँ पे प्राप्त करें, कहाँ पे ढूंढें, कहाँ पे मिलेगी वो हमें ऐसी खुशी जो कि एक बार मिलने के बाद वो कहीं दूर नहीं जाएगी, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। यस प्रभु जी। Right? We have to understand that to analyze happiness, who is feeling the happiness? Okay, that's why our philosophy is so good. Because Krishna already said in the beginning of Bhagavad Gita, Dehi no ismi nata dehe komaram jovanam chala. So that is the he and the ho, that is the body and the one who is seeing the body. You see, there's two energies in there. One is our body, or other one is the consciousness. You see, so who is looking for the happiness? Is the body or is the consciousness? What do you think? हरि बोल। तो प्रभु जी ने अभी बताया कि अ, जैसे भगवत गीता में भगवान ने एक श्लोक दिया है, देह नोस्मिन यथा देह, है ना। तो हम तो क्या है, कॉन्शियसनेस है ना, हम क्या है, आत्मा है। और इस जो खुशी को हम ढूंढ रहे हैं, उस खुशी की आवश्यकता किसको है, आत्मा को है या फिर शरीर को है? कौन ढूंढ रहा है वास्तव में ये खुशी? आत्मा ढूंढ रही है या फिर शरीर ढूंढ रहा है? यस प्रभु जी। So the soul is described as Sat Chit Ananda, eternal Sat Chit, full of knowledge, Ananda, full of bliss. That is the original condition of the soul. So the soul looks for that equivalent in eternal happiness. Ananda, Sat-Chit, eternal manifestation of our happiness. So how is our happiness? I'll give example, and you're going to relate to that. हाँ, तो प्रभु जी ने बताया कि जो आत्मा है वो सच्चिदानंद होती है ना। तो जैसे हमारा भौतिक शरीर है 5 महाभूतों से बना है ना, उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है
उसके 3 कंपोजिशन होते हैं सच्चित आनंद। तो वो हमेशा उसी के बराबर की खुशी को ही हमेशा, या फिर उसी आनंद को ही हमेशा ढूंढती रहती है, कि जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है ना। अब वो उसको मिलेगी कहाँ पे वो खुशी है जो। यस प्रभु जी। So naturally, we're looking for happiness, and that's all right, but we're looking in the wrong place. We're looking happiness in the wrong place. So knowledge, Chit, is important. To have knowledge or our position, then we can look in happiness properly. तो हम क्या हैं, एक हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है हमेशा प्रसन्न रहने की, हमेशा खुश रहने की, उस स्थिति को हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, है ना। गलत नंबर हमेशा हम लगा रहे हैं। तो हमें देखना होगा, अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा कि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, और वो स्थिति में जो हमारी खुशी होती है वो हमें कहाँ मिलेगी। Our position is like Mr. Fish. Okay? Mr. Fish, he came out to the ocean and immediately he was offered all kinds of good things. No, beautiful car, the Ferrari, I'm telling, Gucci bag, nice house, nice Mrs. Fish, no, adoration. He has great knowledge, eloquent. Mr. Fish was having a good time, but somewhere he was not happy. Why he was not happy? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे मछली होती है, मछली को आप पानी से बाहर निकाल के उसको आप फरारी गाड़ी में बिठा दीजिए, उसको गुची का बैग दे दीजिए, है ना, उसको अरमानी की जीन्स पहना दीजिए, तो उसके बाद भी वो खुश नहीं होगी, है ना। कुछ तो कारण है कि जो मछली है वो खुश नहीं है फरारी में घूमने के बाद भी। तो ऐसा क्यों है, किस कारण से वो मछली खुश नहीं है इतनी सारी सुख सुविधा होने के बाद भी। So Mr. Fish, he has everything. He was happy, but he was not happy inside his heart. Why he was not happy? Can anybody tell me? You can write, you can tell me. तो मछली को That's तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी टॉप ब्रांड की उसको चीजें दे दी गई हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसके हृदय में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। तो ऐसा क्यों है, किस कारण से है, कौन इसका जवाब देगा। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है कि वो मछली खुश नहीं है। who can tell me? Come on. यस, आंसर दो, कोई कोई तो बताओ। किसको चाहिए अरमानी की जीन्स। Volume. प्रभु जी, देयर इज अ Okay. मैसेज इन चैट बॉक्स। Somebody said the material instincts are mode of happiness for human only. Okay, but we have to go deeper than that. Mr. Fish was not happy. He wants to go back to his own environment. When Mr. Fish goes to the water, he is in his environment. Before, he was outside his environment. You see, we are Mr. Fish and Mrs. Fish for some of you. Okay, so we want to go back to our original consciousness, like going back to the ocean. Then we can be happy and have that eternal happiness. तो प्रभु जी ने बताया अभी कि मछली खुश क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने उस स्वाभाविक वातावरण से दूर है, जो कि उसका पानी में रहने का है ना। अगर आप मछली को पानी से निकाल के कहीं और अप्राकृतिक जगह पे रख दोगे, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तो उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति है, ठीक है। हम भी आध्यात्मिक स्वरूप में हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। तो अभी हम क्या है, भौतिक संसार में आ गए हैं। तो इसी कारण से हम भी यहाँ पे प्रसन्न नहीं है, और कभी रह भी नहीं सकते हैं, जब तक कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में, या फिर उस स्वाभाविक जो वातावरण हमारा, जब तक उसके संपर्क में हम नहीं आएंगे। So here we have in the Bhagavad Gita 15:6, right? Yada gatva nani vatante tad ama paramam
mama. Dhamma parama mama. That supreme abode of mind, once attained, will never return to this material world. So that's the place we have to look for eternal happiness. Parandama, my abode, eternal. You see, Krishna is giving a hint to us. That's a place we have to look for it. Okay? यस, तो प्रभु जी ने अभी एक श्लोक कोट किया भगवत गीता से, ठीक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे उस परम धाम में जाने के बाद, ठीक है, कोई भी वापस नहीं आता है, ठीक है। तो हमें उस Right? जगह पे ढूंढना चाहिए अपनी खुशी को या फिर उस आनंद को, ठीक है, क्योंकि वही सही जगह है, क्योंकि वहीं पे हम अपने उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मछली बिछड़ी हुई थी समुद्र से, तो सेम स्थिति हमारे लिए, हमारी असली जो जगह है वो भगवान का धाम। यस प्रभु जी। Right? The antithesis, the opposite of happiness is temporary life or temporary happiness. You see, because there is an end, and when ends, there is illusion, there is pain, there is, a shock. The top shock is that we die, somebody died, and that causes again stress because we're so comfortable in our position here and now that we create a situation that we have everything lined up, and here's the job, here's the retirement fund, here's everything, and then everything's taken away from you, whatever you set it up, and you have to start all over again. That is doesn't sounds like a happy prospect of the living entity. प्रभु जी, आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? Okay. We have to re-engage in the material world again and again. You see, if your happiness is eternal, temporary life is not happiness. But we try to make that temporality our happiness. And that is the problem. And that's shock. You see, when the thing finish, you lose your job, you lose your bank balance, you lose a partner, spouse, you lose your life. It's pain. You see, so what is the happiness in there? There's no happiness in these things. We have to prepare for the eternal happiness, and that's the process we're going to talk about now. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में, ठीक है, हम जो ये अशाश्वत जो ये खुशी है या फिर जो भी सुख सुविधाएं, इनको हमने खुशी मान लिया है, ठीक है। तो यहीं पे सारी कहानी स्टार्ट होती है हमारे कष्टों की, ठीक है, क्योंकि जो ये भौतिक संसार है इसका तो स्वभाव ही अनित्य है ना, अनित्यम अशाश्वतम, ठीक है। तो इसको यदि हम सत्य मान लेंगे या फिर वो शाश्वत खुशी मान लेंगे, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता हुई है, ठीक है। तो प्रभु जी ने कहा कि हमारी जो नौकरी है वो भी छूट जाएगी, हमारा जो बैंक बैलेंस वो भी छूट जाएगा, हमारे जो धर्मपत्नी है या पति है, जो भी हमारे साथी है, परिवार है, वो सब छूट जाएंगे एक दिन, है ना। और इन सब के बाद कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है जब कोई हमें छोड़ के जाता है। तो सुख है कहाँ यहाँ पे? कहाँ सुख है इस संसार में? है ही नहीं। यही सच्चाई है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी सुख है ही नहीं। यस प्रभु। So, the eternal life is not a mystery. Maybe it was before, but it's not a mystery. It's not locked away in any way. It's available to all of us by the process of bhakti yoga. That who bought the process of bhakti yoga? You see, Savai Punsan Parodharmo Yato Bhakti Radoksaje. The highest occupation for all humanity is to engage in unmotivated
uninterrupted devotional service to the Lord, which completely satisfy the soul. That's Bhagavatam 1 to 6. See, our occupation is to engage in devotional service that completely satisfies the soul. Now, that is something that we heard in the beginning of this class. What is the eternal happiness? Okay. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने भी भागवतम का फर्स्ट कैंटो का एक श्लोक अभी कोट किया है। ठीक है, सवै पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति और दोष। तो भागवत में ये बताया गया है कि जो हमारा जो धर्म है, ठीक है, वो क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। और वो सेवा कैसे होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, जो कि नित्य रूप से चलती रहे। और कैसी होनी चाहिए, अनमोटिवेटेड, है ना, उसका कुछ और भी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता की सेवा। ठीक है, यही उस जो शाश्वत जो आनंद है, तो जो खुशी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसकी कुंजी है, उसका सीक्रेट है ना। तो ये जो आज की क्लास का जो टॉपिक है, वेयर इज इटर्नल हैप्पीनेस, ठीक है, असली आनंद या फिर शाश्वत आनंद कहाँ पे है। तो ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, भक्ति मार्ग का पालन करने से ये बहुत ही ज्यादा सुगम है। ठीक है, जैसा प्रभु जी ने भी बताया है। ठीक है, तो हर कोई जीवात्मा उस स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकता है इसको फॉलो करके। यस प्रभु जी। So eternal happiness is a mode of consciousness. Lord Nrsimhadev asked Prahlad Maharaj, "You, my dear devotee," I'm paraphrasing, "You, my dear devotee, what do you want?" "I want to give you some boon." Prahlad Maharaj said, I don't want to forget you ever. I want to always remember you." He could give anything. The Lord Vishnu, told Dhruva Maharaj, "What do you want?" Actually, he was doing austerity. He wants something. But once he saw the Lord, actually, he touched his head with his conch. He lost all desire for anything. You see, I don't want anything. I just want to completely be absorbed in devotion to you. You see, also Sudama Brahmana, he went to Krishna and he gave the poha, the what do you call that, the poha, not the poha rice, the flat rice, right? A little bit, you see. And Krishna was so happy, and they have a whole conversation. He forgot to ask what he came there for. I need some help. My family is suffering. He didn't even have clothes in his body. In his family, they use very raggedy clothes. No Gucci here. So he forgot. You see, this is the unalloyed devotion from the devotee towards the Lord. You see, this is bhakti. या थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने भी बताया कि जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा था, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान दो। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान को बोला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, बस ये है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदैव आपकी भक्ति करता रहूं। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज जी, जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, ठीक है, तो भगवान ने अपने शंख से उनके शीश पे टच कराया, है ना। तो ध्रुव महाराज ने भी भगवान से ये बोला कि भगवान मुझे तो आप यही वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपकी भक्ति में ही निमग्न रहूं, है ना। तो अब कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। जिस प्रकार से सुदामा थे भगवान के मित्र, कैसे वो सूखे चावल, जो प्रभु जी ने बताया, जो पोहा है वो लेके गए थे भगवान के पास, कुछ सहायता मांगने के लिए, ठीक है, मित्र के रूप में। ठीक है, लेकिन जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो सब कुछ भूल गए। ठीक है, कुछ बोल ही नहीं पाए। तो यही स्थिति होती है, एक जो हम शुद्ध भक्ति जब हमारे हृदय में होती है। जिस प्रभु जी। You see, so
back a little bit here. We have a beautiful process for engage in eternal uh, uh, to engage in your eternal happiness. Okay. We have the process of sound vibration, which is the chanting of the holy name. Okay. The chanting of the holy name, it's a mystical sound vibration because we're associating with the supreme personality of Godhead. This is the most subtle association you can have because sometimes you associate with the person, but you're not there, you know, in different ways. But to a sound vibration that you can carry anytime, anywhere, it's the greatest mercy. And who gave that vibration is Sri Chaitanya Mahaprabhu, fantastic manifestation of the Lord. He came here in Mayapur, and he delivered. He's the yoga avatar. He delivered the whole world, plus more. Who knows? Is Prithivite Nagara Digram, Sarvara Prachar Hobe Morona. Maybe not just in Earth, but different planetary systems. Because he's yoga avatar. He's not just Bhumi avatar, Lord Chaitanya. He's yoga avatar. And when he came, there was no America, no Europe, a little barbarian people living there. And nobody think, these people will, turn out to be anything like Vaishnavas, but, see how things changed. Similarly, we don't think that it's going to be interplanetary preaching, but, who knows, in 100, 200 years, we may have either dimension traveling or other planets traveling. We're going to preach in many places to many people. And if you want to preach to the aliens, the first thing you're going to say is you're not this body. You're not an alien body. You're not a human body. You're not, you are a spirit soul. All of them are a spirit soul. See, I'm teaching you to preach to the aliens. थैंक यू प्रभु There you go. तो प्रभु जी ने बताया है उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक जो ध्वनि है वो हमें दी गई है स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जो अब से लगभग 550 वर्ष पूर्व श्री मायापुर धाम में अवतरित हुए थे। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि, तो इसके द्वारा हम अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कोई भूमि के अवतार नहीं है ना, जैसे नॉर्मल भगवान प्रकट होते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का युग अवतार है। ठीक है, और महाप्रभु ने स्वयं कहा था सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, कि उनका जो नाम है, ठीक है, वो हर जगह प्रचार होगा उनका। ऐसे नहीं कि केवल भारत भूमि में जहाँ पे प्रकट हुए वहीं पे प्रचार होगा, नहीं, बाहर पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह, जैसे प्रभु जी ने भी बताया एलियंस को भी, ठीक है, तो वहां भी प्रचार हो रहा है। हम भी टकरा सकते हैं किसी न किसी एलियन को, हम भी उनको बोल सकते हैं जैसे प्रभु जी ने बताया। ठीक है, तो एक भगवद गीता अपने पास रखनी है और उनको बताना है आप एलियन नहीं हो, ठीक है, आप स्पिरिट सोल, आप जीवात्मा हो, आप भगवान का नाम जपो। तो यही स्वाभाविक स्थिति है और सबसे सुगम मार्ग यही है जो कि स्वयं भगवान ने हमें दिखाया। यस प्रभु जी। Why you think this guy, Elon Musk, is really determined to go to Mars, to start the human exploration beyond the Earth? He may think that, whatever he thinks, but he may be an instrument of the Lord to create a situation that our planetary preaching just starts.
and we're going to preach some other place, you know, far away from the earth, you see, to give this to the whole universe as far as we can. It's 10,000 years. We have plenty of time. Look how technology is developing so quick. You see, you remember Lord Chaitanya is not Bhumi avatar, he is Yuga avatar. And the Yuga is this whole Kali Yuga. You see, he's the Yuga for this age, not just earth, for everything that comes with the Yuga. Okay, the like Satya Yuga was not just here in this earth, was other places also, celestial places also. Same thing, in Kali Yuga is a Yuga avatar. तो प्रभु जी ने बताया कि जो एलन मस्क है, तो आपको क्या लगता है कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है बाहर जाने में, है ना? तो बाहर जाके मंगल ग्रह पे जो है मनुष्य जीवन की खोज करे, या फिर उसको ढूंढने का प्रयास करे, तो इतना हो सकता है कि ये भगवान की ही कोई लीला हो, है ना, कि भगवान को प्रेरणा देने के बाहर जाके कोई ढूंढने, कुछ प्रचार करे। ठीक है, क्योंकि हम प्रभु युग अवतार है, वो भूमि अवतार नहीं है। और युग अवतार जैसे प्रभु जी ने बताया, है ना, जैसे सतयुग था, है ना, तो उसी प्रकार से अभी कलयुग है। तो कलयुग केवल धरती के लिए नहीं है, जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, सभी के लिए कलयुग है। ठीक है, क्योंकि युग चल रहा है, तो इसके अंदर जितने भी युग हैं सभी के लिए कलयुग एप्लीकेबल है। तो वहां भी प्रचार हो रहा है और होना है प्रचार, और इसी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो भगवान की क्या लीला हम कुछ नहीं जानते, कहाँ पे प्रचार होगा, कैसे होगा। यस प्रभु जी। Think about this. Uh, the power of the vibration of the holy name. Just for example, is the power of sound, the power of the name. Everything has a name that designate things. There's a chair, there's a window, that's my name, that's your name. It designates you, right? Or has your essence, or has your corresponding vibration, right? But they're not connected. For example, let's say water. If I'm thirsty, and now we have the middle of August, we're thirsty all the time. So if you go, oh, water, 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 are you getting your thirst satisfied or not? Yes, यस, तो no, maybe. You get satisfied? No, नो नो you प्रभु don't जी, get satisfied. या यू डोंट गेट सेटिस्फाइड। Yeah, I understand. You get the translation. I'm gonna go for the next. ओके। तो प्रभु जी ने बताया अभी कि अ, ये जो हर चीज़ कुछ ना कुछ नाम होता है ना, किसी किसी भी चीज को नामांकित करने के लिए। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, खिड़की है, दरवाजे हैं, बेड है, पेंसिल है, मोबाइल है, तो उसी प्रकार से हर चीज नाम होता है। तो ये भगवान की दिव्य ध्वनि है, आध्यात्मिक जो तरंग है, ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये भगवान ने हमें स्वयं दी है। ठीक है, कि जिस तरह हमेशा भगवान रखते हैं, है ना। और भौतिक संसार में तो ऐसा होता है, हमने देखा है कि यदि हमें प्यास लगी है तो केवल पानी पानी आ, बोलने से तो हमारी प्यास बुझती नहीं है ना, है कि नहीं? प्यास लगी तो हम पानी पानी बोलते रहें और हमारा गला जो तृप्त हो गया, ऐसा तो नहीं होता है यहाँ पे। या फिर होता है, किसी को लगता है ऐसा? आज तो किसी के साथ ऐसा चमत्कार हुआ हो तो डीडी न्यूज पे उसका इंटरव्यू करवा दे, है ना। तो लेकिन भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो आनंद हमें प्राप्त होता है, वो दिव्य ध्वनि है। यस प्रभु जी। So why I'm not satisfied when I say water, water, or pani, pani, or agua, agua, and say different languages? Because the word water and the substance water, they're different. तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि यदि हम पानी पानी बोलें, है ना, तो हमारी प्यास बुझ जाए, है ना?
कोई भी अपनी अपनी लैंग्वेज में बोले पानी पानी, तो ऐसे क्यों नहीं संभव हो पाता? क्योंकि जो तत्व है पानी, है ना, और जो शब्द है, वो दोनों चीजें अलग अलग है। But the mystical process it starts with the name of Krishna. Because we say Krishna, Rama, Hare Krishna, Hare Rama. This vibration has the same potency of the Lord. So if you change water, you don't get water. You don't get the thirst resolved. But if you say Krishna, you get Krishna in your heart. You get the stage of Krishna, the appearance of Krishna in your heart, the purification of Krishna, because the word Krishna and the substance Krishna, Krishna himself, they are one and the same. तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि जो भगवान का, जो हम नाम जपते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, है ना, तो क्या भगवान के नाम है और स्वयं भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम जैसे ही हम जपते हैं कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो आभास है वो हमें हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें हम नाम जप करते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति हमें होती है। ठीक है, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। यस प्रभु। So we have a tool that nobody else has, the sacred mantra, which actually is not sacred anymore because we spread with 50 million books. And then everybody know, oh, that's the Hare Krishna people in there. You see, Lord Chaitanya made the mystic name to be available to everybody. This is the mercy of Lord Chaitanya. तो हमारे पास एक विशेष यंत्र है, एक विशेष सुविधा है, ठीक है, भगवान का नाम जपने की। ठीक है, जो कि किसी और के पास नहीं है, लेकिन है सबके पास, क्योंकि ये एक गुह्य जो ये एक सीक्रेट है, ये ऐसा जो कि ओपन है, सभी के लिए खुला हुआ है। क्योंकि महाप्रभु ने इतना प्रचार किया है, उनके भक्तों ने इतना प्रचार किया है, आज पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र की धूम है। तो एक ऐसा रहस्य है जो कि खुला हुआ है। ठीक है, ये महाप्रभु की विशेष कृपा हम सबके ऊपर, इतना सारा भक्तों ने ग्रंथों का वितरण किया है, तो उसके माध्यम से हर कोई अब देख सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या शक्ति है, उसका नाम जपने का क्या प्रभाव होता है और कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। यस प्रभु जी। The name of Krishna, it comes with all his potencies, his personality, his pastimes, his lights and delights, everything comes with the name Krishna. You see, he comes with Sri Guru, he comes with the Vaishnava Sangha. The name of Krishna has the DNA for us to attain the transcendental realm, to find eternal happiness. You see, just like a DNA is very small, it forms the baby and grows limbs and grows organs, you see, and become a full-fledged person. तो भगवान का जो नाम है, ठीक है, भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान से अभिन्न है। ठीक है, तो श्री गुरु हैं, भक्तों का संग है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें नाम जप करने से और ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से एक डीएनए होता है, प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार से एक वो अ, गर्भ में भ्रूण से लेके आगे पूरा जो बच्चा होता है ना, वो कैसे उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास भी एक डीएनए है। ठीक है, कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को डेवलप कर पाएँ। ठीक है, और अपने उस स्वाभाविक स्थिति में उस शाश्वत आनंद को हम प्राप्त कर पाएँ।
एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे पास। यस प्रभु जी। This DNA also can be compared to Bhakti Lata Bij, to the seed of devotion, you see? And the holy name is watering that seed. That seed grows, and there is a beautiful tree, flowers, everything. It grows, it manifests. Just like a little seed, a banyan tree, I can look my hand here, it becomes a huge tree, man. You can make a tree house on top of it. बिल्कुल। तो भक्ति में जो है हम इसकी तुलना कर सकते हैं भक्ति लता बीज से, ठीक है। और हरि नाम है, हरि नाम के द्वारा उस लता को सींचा जाता है, ठीक है। प्रभु जी सॉरी आई फॉरगॉट द रिमेनिंग पार्ट व्हाट यू सेड। It's like Hari Bhakti, Bhakti Lata, that, like the seed of devotional service, like DNA, right? And if from a very small seed, it grows up in devotion. So the holy name, he gives you everything you need to be focusing in advancing in devotional service. If you need prosperity, if you need knowledge, if you need austerity, he'll give you what you need to keep going, keeping going. No, don't stop. You know, no, you have knowledge. No, I'll give knowledge by which you can come to me. Krishna said, you see, he gives what you need uh, for his for our devotion to keep growing. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए की तुलना हम बीज से कर सकते हैं, जो भक्ति और बीज जो होता है भक्ति लता का, ठीक है। और जो कि हम हरि नाम के जप के द्वारा इसको सींच सकते हैं, ठीक है। तो हरि नाम हमें वो सारी चीजें प्रदान करता है कि जिसके द्वारा हमारी जो भक्ति की जो लता है वो बढ़ती रहे, ठीक है। हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें, चाहे वो हमें धन की आवश्यकता हो, चाहे हमें ज्ञान की आवश्यकता हो, चाहे हमें तप करने की आवश्यकता हो, ठीक है। तो जिस भी चीज़ की हमें आवश्यकता है वो नाम के द्वारा हमें प्राप्त होगी, और उसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे और अपने स्वाभाविक स्थिति को, जो आनंद की स्थिति है, उसको हम प्राप्त करेंगे। जय प्रभु जी। So if, let's say, I have a father has his son, and he sent his sons in the school like in America or Europe. So when he goes to school, he'll be provided a place to stay. He'll provide his food. See, all you have to do is to study, apply himself, get good grades, right? So similarly, if we in the school of life, we're learning to develop our devotion. Well, whatever we need, you'll be giving to us. Just like a good father will give his son whatever he needs to study, whatever it is, Krishna will give us what we need to keep developing our devotion, going towards our eternal happiness. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने अभी एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराता है, ठीक है, उनको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो बच्चे का केवल एक ही कर्तव्य रह जाता है कि वो अच्छे से पढ़े और अच्छे अपना उसका परिणाम आए, है ना, पढ़ाई का। तो इसी प्रकार हम भी इस स्थिति में हैं, ठीक है। तो हम भी जीवन की इसी स्थिति में हैं, तो भगवान ने हमें सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, और भी सुविधाएं भगवान हमें प्रदान कराएंगे। तो हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि हम अपनी भक्ति अ, को अच्छे से करें, ठीक है। भक्ति को अच्छे से पालन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जिससे कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को हम प्राप्त कर पाए। जय प्रभु जी।
So if you guide our life, focusing in advancing in our spiritual life, doing your chanting, participating in our programs, associating with the devotees, healing the holy name, you see, and then we do our duty. We have a job, or we're student, we have to study, or whatever it is that we do, you see. Always we have to focus in what is my eternal happiness, and you make endeavor to reach that. To reach, we have a whole life. We're not gonna go in a jet set, tomorrow, but we have a whole life to gradually get to that position that we become aware of our transcendental nature and get close to Krishna. थैंक यू प्रभु। तो हम इस भौतिक संसार में रहते हुए चाहे कुछ भी करें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, पढ़ाई लिखाई हुआ, नौकरी हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है। तो इन सबको करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम उस प्रोसेस को जरूर फॉलो करते रहें, ठीक है। जो भक्ति मार्ग है उसको जरूर हम पालन करते रहें, ठीक है, सो दैट कि हम उस स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाए। हाँ, एकदम से तो नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, कि जादू की छुड़ी घुमाई और हम पहुंच गए, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके हम अवश्य ही उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, जो कि आज का टॉपिक है, ठीक है, वेयर इज इटर्नल हैप्पीनेस। उस दिव्य आनंद की स्थिति को हम अवश्य प्राप्त करेंगे यदि हम उसको फॉलो करेंगे। यस प्रभु जी। Got it? I miss you. Okay? यस प्रभु जी। So this is a path for our eternal happiness. Eternal. There is a place, Parandama, Krishna said. Okay? And we have the personal association with Krishna through the holy name. The personal manifestation of Krishna through the assembled devotees. The personal blessings of Lord Chaitanya for us to purify our hearts and become, let's say, advanced in understanding what Krishna is. Because without Lord Chaitanya, I don't know how I could understand Krishna. Impossible. Because Lord Chaitanya means also Prabhupada to come and explaining to us, what is this Krishna? You see, what is this Lord Chaitanya? We wouldn't be able to understand. So by the mercy, we can understand and we can cultivate our eternal life. But now, to really cultivate, we have to realize that and also give that, just like Prahlad Maharaj, to the people around us. Prahlad Maharaj, he he was very devotional, and then he make his students, friends, devotional also. Go on, Prabhuji. ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए हम शाश्वत आनंद को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में मिलेगा, जैसा भी प्रभु जी ने बताया, ठीक है। और उसको प्राप्त करने का क्या साधन है कि भगवान के नाम का जप करना है, उनके भक्तों के संग में रहना है ना। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही ज्यादा विशेष कृपा है। ऐसा भी प्रभु जी ने बताया कि यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं हो तो हमारे लिए असंभव है कि हम भगवान श्री कृष्ण को जान पाए या समझ पाए, है ना। और ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से ही हुआ है, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें श्री प्रभुपाद जी मिले हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें ये सारा दिव्य ज्ञान, भक्ति का जो प्रचार किया उन्होंने, ठीक है। तो कितनी सारी सुविधाएं भगवान हमें दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबका यूटिलाइज करना है, इनका लाभ उठाना है और उस जो दिव्य आनंद है, ठीक है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, यदि हम जो प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यस प्रभु जी। Thank you, Prabhuji. Thank you, Gauri, doing great job. So, थैंक यू प्रभु जी। what is the greatest argument of Prahlad Maharaj? A famous argument, because he was telling this
his peers, his school friends. We have to have devotion for Lord Vishnu. We have to chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He was teaching them, and the children said, "Oh, we're children. This is we do later. Why should we do it now? We're children. We just want to play and do things. Blah blah blah." And what did Prahlad Maharaj answer them? So It's a जिस question. प्रकार से हम्म, तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज हैं, वो अपने स्कूल के मित्रों को प्रचार कर रहे थे, ठीक है, कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन उनके जो स्कूल के जो मित्र हैं, ठीक है, वो सब तो क्या बोलते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको बोलते थे अभी क्या आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। भागवत में पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है। तो प्रभु जी, सॉरी आई फॉरगॉट द लास्ट पार्ट। The argument is the students, the internet's a little caca in there, but don't worry. So the argument was, why should we do this now? If we're children, we do later. Okay, that's what they say in Prahlad. What did Prahlad say? तो जो कोई ने बताया कि जो असली मुद्दा है वो ये है कि जैसे उनके स्कूल के दोस्तों ने, प्रहलाद महाराज के स्कूल के दोस्तों ने बोला कि हम अभी क्यों करें, अभी क्या आवश्यकता है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है ना, तो ऐसी क्या आवश्यकता कि अभी हमें भक्ति करनी पड़ेगी। तो यही असली मुद्दा है। तो इसमें प्रहलाद महाराज जी ने क्या आंसर दिया। यस प्रभु जी। So Prahlad Maharaj said, well, no, right now we're children. We spend our time playing. Then we're going to be students and we're going to apply ourselves in our studies. We don't have time. Then we're going to go enter the workforce. And then we're going to get married and have family. And then we're going to work to build up, whatever it is that we're going to build up our life. And then we're going to get old. When you're going to engage in looking for eternal happiness, when you're going to do that, you better do it now. तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि अभी तो हम बच्चे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम सब छात्र हैं, आगे जाके फिर हम और बड़े हो जाएंगे, फिर और पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, है ना, फिर हमारे परिवार होगा, शादी होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, है ना, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन भक्ति हमें अभी से करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमें समय ही नहीं मिलेगा उन सभी चीजों में व्यस्त होने के कारण। तो यही सही समय है भक्ति करने के लिए। यस प्रभु जी। So some of you, I don't think anybody is in the playing age, but some of you are in the student age. And some of you are preparing to go in the family age and get married, get a spouse, go to the workforce. So our job is to get a parallel track to cultivate Krishna consciousness while all these things are going on. So we don't waste time. Yes, we take care of our bodies, we do everything we have to do, we get a job, we do everything. But at the same time, we do everything that we have to do to become aware of our Krishna consciousness, our eternal consciousness, happiness, and pursue that. Because we came here to pursue that. And if you don't do that, the material energy won't reciprocate with us the way we think it should. We want the goodies. We want the good things from the material energy. It won't happen as much as if you engage yourself in developing your spiritual life, then you are in the path that is harmonious with the universe because you came here for that. That's it. Like the student is studying, he got A's, and everybody's happy. If you're not, well, we have a problem. यस प्रभु जी। तो गुरु जी ने भी बताया Much. कि हम सब लोग यहाँ पे आए हैं भक्ति करने के लिए,
ठीक है। तो भक्ति यदि हम नहीं करेंगे और बाकी सब चीज़ों में व्यस्त रहेंगे, ठीक है, तो वो जो आनंद हमें चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, बाकी सारी चीज़ें भी हमें करनी है, ठीक है, अपनी जो भी भाई कर्तव्य हैं, वो सब भी हमें निभाने हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ भक्ति तो हमें अवश्य करनी ही करनी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, हम चाह रहे हैं वो आनंद की स्थिति में रहना, ठीक है, शाश्वत आनंद की स्थिति में रहना, तो वो स्थिति हमें कभी मिल नहीं पाएगी, उस आनंद को हम कभी अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो भौतिक जो प्रकृति है भगवान की, ठीक है, वो तो फिर हम सब जानते हैं कि कितनी प्रबल है वो, ठीक है, उसे पार पाना कितना कठिन है, ठीक है, तो उससे हमें कोई सहायता नहीं मिलने वाली है फिर, ठीक है, यदि हम उस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे कि जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यही वो सही समय है, ठीक है, अभी हम जिस भी स्थिति में हैं कि हम भक्ति का पालन करें, जैसा प्रभु जी ने बताया था कि जो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है भगवान के नाम का जप करना, ठीक है, और भी अन्य चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनका हम पालन करें तो हम निश्चित रूप से अम, उस दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। यस प्रभु जी। So, can you repeat the last part in English? So just the end, so I can get the. I have a lot of things going on here. Can you repeat the last part in English, Prabhu ji, you just told that we are please? here, uh, and if we do not practice a devotion service, then the material energy that will break us, and we will not get any help for material energy, so that we will be Okay. able to taste the eternal happiness. Okay. So we have the mercy of Lord Chaitanya, and that is, I cannot tell you how I have a glimpse how the Lord Chaitanya is such a merciful personality. Allow us to enter in the beautiful pastimes of Sri Krishna and his devotees. So let's take advantage of that. Okay. And we're gonna go and look for our eternal happiness. It's within grasp. And we're already into the process. We're doing everything nicely. This process is very powerful. If you just worship Tulsi, you can get liberated. If you just take prasada, you can get liberated. You see, if you just worship the Lord in the temple, you can get liberated. You read Bhagavatam, you can get liberated. You go in the temple, worship the Lord in the temple, you can get liberated. You go in the holy dome, you can get liberated. So many liberation all together. If you don't make up there, you know, no, we're very unfortunate, but we're not unfortunate. We're very fortunate. We're doing all this together. It's a very powerful process that you cannot find anywhere else in this world. You see, that is Krishna consciousness, that we have this personal association with Krishna through his sound vibration. तो प्रभु जी ने भी बताया कि हमारे पास है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, ठीक है, हमारे पास है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो विशेष जो उनकी लीलाओं का वर्णन है, ठीक है, और उनका धाम कैसा है, ये सब सारी चीज़ें हमारे पास है, और हम ऑलरेडी उस चीज़ को हम पालन कर रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठ के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमें क्या करना है, ठीक है, चाहे हम अ, धाम की यात्रा करें, चाहे हम भगवान के जो प्रसादी तुलसी हैं, चाहे हम उसका सेवन करें, ठीक है, भगवान का महाप्रसाद पाएं, भगवान के नाम का जप करें, तो कितनी सारी चीज़ें हैं कि जिनको करने मात्र से हम भागवतम पढ़ें, ठीक है, जिनसे हमें तुरंत ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम्म, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अ, कोशिश करें कि ये जो भगवान ने हमें बताया है कि भगवान के नाम का जप करना है, ठीक है, तो ये बहुत ही सुगम मार्ग है, सबसे इजी जो रास्ता वो यही है, भगवान के नाम के जप के माध्यम से।
हम उस शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यस प्रभु जी। So we're almost finishing. So in the movie Nashinga Avatar, Prahlad Maharaj has his friends and he's preaching to them. So each one of us should become a Prahlad Maharaj and have our friends. People will every day will interact, and we should glorify the Lord in a way that's attractive to them. Not fanatic, but it's nicely. You see, because Krishna conscious, when presented nicely, it's very attractive. Because people get curious. How is this? How this happening? What's the process? So each one of you, you'll be a Prahlad Maharaj. Who wants to be Prahlad Maharaj? Okay, I got one there. I got another one. Who is there? Raise your hands. Yes, yes. Ashita Mataji, can go So, hand raise. uh, so we're gonna see all the people we interact every day. They're gonna become our students' friends, and we're gonna, give a taste of Krishna consciousness. Now, the taste could be prasadam, which is a nice introduction for Krishna consciousness. You see, when I was in the temple in the second day, they put me to work painting something the wall. I was in the stairs, and some guy came from nowhere and said, "Prabhu, here." Boom! He puts a simply wonderful in my mouth. It's like a sweet. And I was thinking, this place is nice. There's good food, good vibration. I want to stay here. I don't want to go anywhere. See, that's how no we should do. Good knowledge, good prasad, and good association. Our Gora is in the move. सॉरी प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, ठीक है, जैसे अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी हमने देखी है, तो जैसे प्रहलाद महाराज जी अपने स्कूल के जो मित्र थे उनको सबको प्रचार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो प्रचार इस तरीके से कर रहे थे कि वो सबको आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ, है ना। तो हमें भी यही प्रयास करना है कि हम कृष्ण भावनामृत को इस प्रकार से प्रचार करें कि सामने वाले को वो आकर्षित करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मुझे ने भी बहुत सारी चीज़ें बता दी। What is that? Probably I think it's too long. I forget the rest of the part. What I was saying is that we make people feel हाँ, welcome in यस। understanding तो Krishna हाँ, ये consciousness. ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कृष्ण भावनामृत को इस तरीके से प्रेजेंट करें दूसरों को कि भाई वो उनको वेलकमिंग लगे, है ना। हम केवल उनको ज्ञान तो बांट देंगे, लेकिन वो चीज़ यदि हमारे आचरण में नहीं है ना, सो दैट कि वो सामने वालों को आकर्षित करे, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे वो प्रचार कर रहे थे। उनके जो जितने भी फ्रेंड्स थे, जैसा कि मूवी में दिखाया गया एग्जैक्टली वैसा ही था, ठीक है। उनके जो मित्र थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, ठीक है। अच्छा, ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं, है ना, इतने इतने प्यार करते हैं। तो भागवत में ये सारा वर्णन है जैसा मूवी में दिखाया गया है। तो हमें भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस प्रकार से प्रचार करना है, ठीक है। तो प्रभु जी ने पूछा था कि कौन कौन प्रहलाद महाराज बनेगा, तो आई थिंक सब कोई बनना ही चाहता है ना, हर कोई उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहता है ना? तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भागवत का हम श्रवण करते हैं, भागवत का हम पठन करते हैं, पढ़ते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, और भागवत अभी हमें देखने को मिल रही है। ये भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है ना, ये प्रभा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि तीन माध्यम से भागवत हमें मिल रही है, क्योंकि भक्तों ने मूवी बनाई है, डिवोटी है ना। यस प्रभु जी। Okay, so to all my Prahlad Maharaj,
we got homework to do. And one thing here is that, let me see. I would like to have, we're going to end the class in here, our podcast, and we want to have a feedback. I appreciate if you write, tell me, the points that you like the most. It helped me. Yes, there is a homage for Srila Prabhupada in the 12. Okay, so don't forget that. And for my podcasting here, it's nice to hear what is it that you like, how did you, understood what has been said here today. It helped me to organize for the next class. Okay, so anybody has a question, now is a good time or some. And before the question, I want to thank God. I can see it's hard on him. You have to think, it's like a little bit of it's a double brain drain in there. I understand. I see you, Prabhu, because me too, having to formulate thoughts and wait for you to speak also, it is, you have to keep focusing, but you have to keep focusing twice. And sometimes I speak a little bit, too much. Sorry. And I know. Thank you so much, Prabhuji. Pray the Lord bless you. Okay, and Saurabh, thank you for putting this podcast. Okay, so now it's time for the questions. Let's have it. तो प्रभु जी सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हर क्लास में प्रभु जी करते हैं फीडबैक के लिए। तो जैसे भी आपको आज की क्लास में आके लगा, जो भी आपने सीखा, ठीक है, या आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो वो आप प्रभु जी को लिख सकते हैं। आप मुझे या फिर सौरभ प्रभु जी को लिख सकते हैं। ओके। और इसके अलावा अभी सौरभ प्रभु जी ने चैट बॉक्स में एक मैसेज डाला है श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के लिए। सो आप उसमें अपनी व्यास पूजा होमेज सबमिट करा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के ही छोटे क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड बच्चे। ठीक है। तो और प्रभु जी पूछने, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अच्छा समय है क्वेश्चन पूछने के लिए। Prashna प्रश्न Samay. परिप्रश्नेन सेवया। You keep writing. Many of you that you come here regularly, I'm very impressed. Thank you so much. I pray for all of you. Such a wonderful association. It's a wonderful association. Just like I said in the beginning of the class, that when we see the movie Nashingadev, it's very good, but it's wonderful. But when you see with devotees, 200 devotees, the whole theater was packed, only devotees. So it was 10 times better, to see the devotees. Amazing. The power of that association was amazing. Yes, Puri. I also had the same experience. I saw, I Yeah. watched first show on 25th of July, and a devotee association, approx 100 devotees were there, and every time we were shouting like anything, clapping, and Jai Nrsimhadev, Jai Varahadev, and the atmosphere was surcharged. And another time I watched the movie two times in my campus, in my camp area, and there was nothing, no atmosphere like that. So yeah, devotee Yeah, association is very, very important. correct. Is this movie like a famous movie already in India or not? This movie Pruji is, yeah, very super hit in India. Super hot, huh? Yeah, super hit, top charts. Good. Mm, yes. Okay. Here they show at the end of the movie, they show the TOVP in Mayapur. Did they show you that too? Yes, yes. Of the And in place of the Nashinga there. yes,
And in the starting, they also showed Srila Prabhupada name in the Yeah. acknowledgement. Yeah. Okay. So, anybody has a question, anything? I'm right now, short questions. Otherwise, I'm just gonna close I think, this Prabhu, beautiful association. by Yeah. your classes, now everyone is becoming a Paramahansa. So I think there is no doubt. My Prahlad Maharajis. Look at that. All my Prahlads. Now all of us are coming to the stage of Sat Chit Anand. Yeah, we are. Well, this is Prabhupada's mercy. Okay, so we're gonna do that. Yeah, I miss Prabhupada. Okay, thank you. I ask permission to leave. And Prabhuji, next week, Okay. and Prabhuji, coming Wednesday, we will do glorification of Srila Prabhupada's session. So please invite everyone. Yes. Okay. I thought we're gonna read a little bit of glorification both, or just gonna do the glorification, right? सौरभ प्रभु जी पूछ रहे हैं So now, Yes, Prabhuji. प्रभु जी okay. पूछ रहे हैं Well, ग्लोरिफिकेशन करना once, है Yeah, all devotee will glorify Srila Prabhupada. go ahead. Yes, so everyone All the okay. will give 5 minutes or 3 minutes. So Okay, yeah. according to homage, he can read homage front of everyone. Okay. गुड आइडिया Okay, Prabhuji. So thank you so much, everybody. Please bless me that I can continue do this, your Paramahansa enhancement. Thank you. Hare Thank you so much, Krishna, Prabhuji. Thank you so much everybody. Thank you so for much. Hare taking Krishna. your Hare valuable Krishna. time for enlightening all of us. And I request all the devotees to chant Hari Bol 3 times for Prabhuji. Okay. Also unmute हरी yourself. बोल Hare अनम्यूट Bol. कर सकते हैं सब लोग हरी बोल Hare Bol. हरी Hare बोल Bol. Haribol, thank you so Haribol. much Prabhuji. We are very fortunate to Don't have forget, you and don't your forget your association. feedback. Yeah, feedback is important.